Hello students, welcome back once again. So, recollecting what we have done in the last video lecture. So, we completed that till the concepts of preparation of alkanes. So, here we continue with the physical properties, chemical properties. Okay, so we start from here, physical properties. So physical properties, in that always we have to study two main properties: physical state of that compound, secondly boiling point of the compound. So first, physical state. Now in alkanes which are containing carbon atoms number 1 to 4, okay, carbon atoms 1 to 4 alkane compounds, they are gases, they are gaseous state, physical state. Then alkanes containing carbon atom from 5 to 11, 5 से 11 तक अगर कार्बन एटम्स है अल्केन्स में, दे हैव लिक्विड स्टेट, एंड अल्केन्स विथ कार्बन एटम 12 एंड मोर, वो क्या हो जाएंगे? सॉलिड स्टेट, दे विल हैव सॉलिड स्टेट. तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है. सेकंड आता है बॉइलिंग पॉइंट. तो बॉइलिंग पॉइंट में, if you refer my notes, next to boiling point I have written van der Waals forces. Van der Waals forces. Okay. These are one type of intermolecular forces. Okay. Already introduced in lower standard, you have studied also. So keeping that concept in mind of intermolecular forces, okay, understand that boiling point of alkanes, lower members they have low boiling point, कम boiling point कम रहेगा. लेकिन जैसे ही कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे अल्केन्स में, तो मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ेगा, ऑफ कोर्स मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट more linking, more carbon atom, more linking, that is more force of attraction. So in the higher cases or higher members of alkanes, boiling point will be higher because of more intermolecular attraction, which are named as van der Waals forces. So after physical state, we come to the last part of the chapter, chemical properties, chemical reactions. In that first category, substitution reaction. Now you know what are substitution reactions. Already we have covered in the first chapter. Okay, explanation for that, this part you will get, okay, tomorrow in my video link. But for time being, you know what is substitution reaction. In that first category, halogenation. So take an alkane, methane. First step, add chlorine, halogen. Halogenation means addition of halogen. So one hydrogen is substituted by chlorine, you get CH3Cl6. And one more HCl which is remaining will combine with the hydrogen which is substituted, forming HCl. Okay, so this will continue. CH3Cl again will react with chlorine. One more hydrogen is replaced, CH2, Cl2, one HCl. One more step, more substitution, CHCl3. And lastly, one hydrogen is remaining, one more molecule,
CCl4 plus HCl. So HCl is a byproduct everywhere. Okay, and the reaction is carried out in the presence of sunlight. H nu मतलब क्या? H nu sunlight. So this is the first category of substitution reaction, halogenation of alkanes. Second, oxidation. Oxidation means reaction with oxygen. So here we have to study two examples. Reaction of alkanes with excess, more amount of oxygen. This is the first example. More amount of oxygen, you get carbon dioxide, water. Okay. Less amount of oxygen. See less. यहाँ पे दो मॉलिक्यूल थे, यहाँ पे एक ही है. बट ये मॉलिक्यूल वही एक ही, ये कम है. In this case, product changes. You got only carbon and water. So very important category of reaction. So keep in mind. And second is oxidation in presence of catalyst. अब यहाँ पे देखिए, मीथेन reacting with O2. Catalyst is copper. You get alcohol. Okay. Now one more example. Higher alkanes. Higher. N means it can be any number more than 4. Okay. Here it can be 5, 6, 7. So higher values of alkanes reacting against oxidation, but in presence of catalyst. Manganese sulfate. Manganese sulfate. So you get acid. See the products. Lower member giving alcohol, higher members they give acid. COOH मतलब acid. And the last reaction, okay, or rather second last reaction, because one more reaction is remaining. So third reaction, pyrolysis. Fragmentation. Okay, fragmentation or pyrolysis means larger molecules of alkanes in presence of heat will decompose, ब्रेक हो जाएंगे और आपको वो बिगर मॉलिक्यूल से स्मॉलर मॉलिक्यूल्स और स्मॉलर प्रोडक्ट्स फॉर्म हो सकते हैं. तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है कि प्रोपेन, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेन हीट कीजिए तो प्रोडक्ट्स ये मिलते हैं हमको. एक तो प्रोपीन, फिर इथीन, मीथेन, हाइड्रोजन. देखो कंपेयर करो ये प्रोडक्ट्स में, ये मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में देखो हाइड्रोजन यहाँ पे कम है इसके कंपैरिजन में, कार्बन 3 है. ओके, यहाँ पे भी 3 है लेकिन ये 2 है यहाँ पे, मतलब 6. तो यहाँ पे 3 ही, तो ये हो गया स्मॉलर फ्रेगमेंट हो गया. ये दूसरा स्मॉलर फ्रेगमेंट एंड हाइड्रोजन. इसलिए ये स्मॉलर फ्रेगमेंट्स फॉर्म होते हैं एक लार्जर मॉलिक्यूल में से. तो रिएक्शन को पायरोलिसिस नहीं तो फ्रेगमेंटेशन भी बोलते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. ओके, दिस वन एंड द लास्ट वन नाउ. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन रिएक्शन. एरोमेटाइजेशन रिएक्शन और रिंग फॉर्मेशन, रिंग. तो यहाँ पे हमारे पास एक कंपाउंड है. स्टूडेंट्स इजीली कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ये ऐसे फॉर्मेट में लिखा है. अगर इसको मैं स्ट्रेट लिखूंगा तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये हेक्सेन अल्केन है. सो हेक्सेन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्रोमिक एसिड CrO3 और क्रोमियम ऑक्साइड. डायरेक्टली यहाँ पे ये कार्बन बॉन्ड फॉर्म करेगा एक कार्बन के साथ और एक रिंग फॉर्म होता है. और रिंग आपको पता है बेंजीन. ये बेंजीन रिंग है C6H6. यू नो व्हाट इज बेंजीन? C6H6. तो ओके, यहाँ पे फिर बाकी हाइड्रोजन ओके कहाँ चले गए? क्योंकि यहाँ पे तो 6 हाइड्रोजन है बेंजीन में. यहाँ पे इतने बाकी हाइड्रोजन कहाँ पे होंगे? वो क्या फॉर्म करेंगे? हाइड्रोजन गैस. तो रिएक्शन तभी बैलेंस होता है
तो इसको एरोमेटाइजेशन रिएक्शन नहीं तो रिंग फॉर्मेशन रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक रिंग फॉर्म हुआ है एंड दैट रिंग इज नथिंग बट बेंजीन रिंग. So dear students, with this particular chemical reaction part, okay, we complete this chapter and also your portion for first term examination. So please go through the notes as you know that we have less time. Watch the video properly. These notes also are already sent. So those are not written yet, not written, might be busy. So please write down fast and watch this video, understand the explanation. Okay, keep your doubts ready because after the today's video link which you will get in the morning before 12 o'clock, okay, you will get the video link for organic chemistry part. The explanation part video link you will get, and then that chapter also will be over. So whatever notes you have written, whatever explanation you have got through my video lectures, okay, that you have to understand and prepare well for your exams. So tomorrow after the video link of the organic chemistry chapter, okay, because of notes already you have written, already you have sent also, check, okay. So after that video link you will complete the portion, okay, and then you keep your doubts and queries ready. That will be a type of revision for you so that I can give you answers, okay. Get your doubts cleared after, okay, completing all these parts. Okay dear students, so tomorrow's video link and one more video link where I would like to really, okay, clarify your doubts regarding the paper pattern for the coming exam. आने वाले एग्जाम के लिए पेपर पैटर्न क्या होगा, मार्क्स के हिसाब से पेपर पैटर्न क्या होगा, तो दैट आई विल गाइड यू, ओके. उसका आपको गाइडेंस मिल जाएगा वो वीडियो लिंक में, ओके. एंड प्लीज डोंट वेस्ट टाइम, दिस इज नॉट द ओनली सब्जेक्ट दैट वी हैव गॉट, ओके. सो प्लान योर टाइम टेबल प्रॉपरली फॉर योर एग्जामिनेशन, प्रिपेयर वेल, okay, clear, get your doubts cleared, complete the submission of the notes. Remaining students, complete the submission of the notes as early as possible, okay. It's a too much delay because otherwise last moment you also won't be having time. That's why I am compelling you to send the notes as early as possible, okay, today and maximum till tomorrow morning. You wind up with the submission of notes, get the feedback, okay, make the changes. So we'll continue with our next video links for first chapter, small part, okay, 3-4 concepts you have to cover from that chapter, organic chemistry, first one, then everything will be done for your exam. So take care, okay. See you in the next video link.